द हॉरर जॉनरा इज़ परफेक्ट फॉर वीडियो गेम्स और मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस हॉरर इज़ थ्रू अ वीडियो गेम। और E.G, जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हो और स्क्रीन पे कुछ स्कैरी आता है तब एज अ व्यूअर आपके पास ऑप्शन होता है टू डू दिस, और आप ये पोजीशन होल्ड कर सकते हो जब तक वो हॉरर सीन ख़त्म ना हो जाए। लेकिन क्या आप यही सेम चीज़ वीडियो गेम्स में कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आई मीन श्योर, आप छुप सकते हो, कीबोर्ड से हाथ हटा सकते हो, कंट्रोलर को छोड़ सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैरी पार्ट खत्म हो जाएगा। द स्कैरी पार्ट इज गोइंग टू बी देयर टिल यू टेक एक्शन। सो एक तरफ जहाँ मूवीज़ में आपको प्रोटैगनिस्ट का बाईस्टैंडर पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, वही दूसरी तरफ वीडियो गेम्स में आप प्रोटैगनिस्ट होते हो। द सर्वाइवल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज एंटायरली इन योर हैंड्स, और अगर आप गलत डिसीजन लेते हो, व्हाट फॉलोज इज नॉट रियली फन टू वॉच फॉर एनीवन। और मैंने ये वीडियो बनाया है टू टॉक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट हॉरर स्लैश साइकोलॉजिकल हॉरर गेम आउट देयर, साइलेंट हिल 2। अब जिससे पहले मैं स्टार्ट करूं, हियर इज़ योर स्पॉइलर वार्निंग। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप दिस वीडियो स्पॉइलर फ्री, बट लेकिन अगर आप उनमें से हो जिन्हें 100% ब्लाइंड प्ले थ्रू एक्सपीरियंस करना है, देन आई रिकमेंड यू स्टॉप वॉचिंग। और अगर आप मेरी बात अभी भी नहीं मान रहे, हियर इज़ द एंडिंग टू द गेम। इट वॉज अ डॉग कंट्रोलिंग एवरीथिंग। お前の仕業だったのか。 साइलेंट हिल सीरीज शुरू हुई थी 1999 में। पहला गेम आया था PS1 पे, जिसे डेवलप किया था टीम साइलेंट ने, विच वॉज अ स्मॉल डेव टीम विद इन कोनामी। टीम साइलेंट ने फिर 3 और साइलेंट हिल गेम्स बनाए, जिसके बाद कोनामी ड्रॉप्ड द बॉल एंड गेव द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ साइलेंट हिल गेम्स टू द वेस्टर्न डेवलपर्स, एंड व्हाट फॉलोड वाज अ रियली प्रिडिक्टेबल आउटकम। लेकिन ये वीडियो में आई एम ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द मोस्ट आइकॉनिक और पॉपुलर साइलेंट हिल गेम, because not only is it an exceptional horror game, it also tells an amazing story about how humans deal with grief and with the loss of life or a loved one. This game is heavily inspired by the work of Alfred Hitchcock, David Lynch, David Fincher, और जब आप ये गेम खेलोगे आप वो बात खुद ही समझ जाओगे, because this game can deliver a lot of what's in the box moments. आप ये गेम खेलते हो as the protagonist James, who has just arrived in the town of Silent Hill because he got a letter from his wife, Mary, who passed away 3 years ago from a sickness which left her bedridden, saying that she is waiting for him in the town Silent Hill. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. गेम के स्टार्ट में जब आप साइलेंट हिल की तरफ जाते हो, इट इज़ अ रियली लॉन्ग एंड टीडियस वॉक, और ये डेवलपर्स ने इंटेंशनली ऐड किया था टू गिव द प्लेयर अ फीलिंग ऑफ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। その街に着いたら引き返せないような距離を出すことによってその孤独感とか不安感とかその隔離された街に来てしまったっていう感じとか。एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी इस क्लिप में वो है द फॉग। फॉग एक कांस्टेंट चीज़ है जो आपको हर साइलेंट हिल गेम में मिलेगी, जिसे इनिशियली ऐड किया था फर्स्ट गेम में एज अ वे टू कवर अप फॉर द PlayStation 1's हार्डवेयर लिमिटेशंस। फॉग को डेवलपर्स ने इसलिए यूज़ किया था टू हाइड द स्पॉनिंग ऑफ मॉन्स्टर्स, क्योंकि अगर मॉन्स्टर्स आपके आंखों के सामने स्पॉन हो रहे होते लाइक GTA San Andreas चीट, तो वो गेम हॉरर कम फनी ज़्यादा लगेगा। एंड द प्लस पॉइंट इज द फॉग एड्स अ हॉरर एलिमेंट टू द गेम। 役が難しいと思うんですけど、ゾクゾクするというか、不安でしょうがない、わからないと、自分の、周りにちょっと先に何者かいるかもしれない、そこにいるモンスターがそれでどんなやつなのかもわからない。とにかくわからないことっていうのが怖いことだと思いますね。इस गेम का कॉम्बैट या मूवमेंट कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट ओकेजनली इट कैन बी वेरी अनोइंग एज वेल, डीलिंग विद द फिक्स्ड कैमरा एंड द जैंकी टैंक कंट्रोल मूवमेंट्स, एंड आई थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ द गेम। जेम्स सॉलिड स्नेक या सैम फिशर नहीं है जो कॉम्बैट एक्सपर्ट होगा, ही इज जस्ट अ मैन लुकिंग फॉर हिज वाइफ। सो ये खराब मूवमेंट, कॉम्बैट एंड द कैमरा एड्स टू द एलिमेंट ऑफ मेकिंग द प्लेयर पैनिक, बिकॉज समथिंग एज सिंपल एज नेविगेटिंग अराउंड द मॉन्स्टर्स कैन बिकम वेरी टीडियस। और अब जब मैं मॉन्स्टर्स की बात कर ही रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द मॉन्स्टर्स इन साइलेंट हिल 2।
जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं साइलेंट हिल गेम्स में, ये सारे मॉन्स्टर्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं गेम की स्टोरी से, जिस वजह से वो चलते ढलते हैं या उनका डिज़ाइन कैसा है. इट इज़ ऑल अ सबसेट टू द स्टोरी. द मॉन्स्टर्स इन साइलेंट हिल 2 आर डिजाइन्ड बाय ईतो मासाहिरो. And that's the 8th time I've ruined the pronunciation of his name. I'm sorry for butchering your name. लेकिन the design of the monsters in Silent Hill 2 is incredible. 人間のパーツをそのモンスターのどこかに必ずこう取り入れて、でそこからプレイヤーがそのモンスターを見て、できるだけ人元は人なんだっていうところをこう The first type जिसे आप encounter करोगे वो है lying figures, जिनकी upper body बस एक body bag है and they attack like this. लेकिन इसका भी एक रीज़न है to why they attack like this. It's a way to represent Mary's sickness. आप कह सकते हो the way they attack is just an exaggerated version of किसी का खांसना. And the name by itself, lying figure, means Mary lying on the hospital bed. The second type of monsters that you'll encounter are the dual leg monsters, जो represent करते हैं या almost कह सकते हो कि mock करते हैं मैरी की sickness को, because जब मैरी बीमार हुई थी she couldn't move, so she was bedridden. So it's a way of mocking Mary's inability to move. The third type of monsters, and personally my favorite monster in the game, are the bobblehead nurses, which represent James' sexual fantasy and attraction to the nurses who took care of Mary while she was in the hospital bed. इसलिए आप उन मॉन्स्टर्स को एक सेक्सी नर्स आउटफिट में देखते हो बिकॉज दे रिप्रेजेंट जेम्स सेक्सुअल फैंटेसीज. एंड द फोर्थ टाइप जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड इज काइंड ऑफ अ कल्ट क्लासिक, पिरामिड हेड और द एग्जीक्यूशनर. पिरामिड हेड रिप्रेजेंट करता है जेम्स के गिल्ट को ऑफ वांटिंग हिज वाइफ डेड एंड द वांट टू बी पनिश्ड फॉर द सेक्सुअल फैंटेसीज दैट ही हैड अबाउट द नर्सेज. इसलिए पिरामिड हेड को पनिशर भी बोलते हैं. その痛々しい感じであるとかがそのまさにその裏設定を説明する上で適当な形だったっていうか。Luckily, Silent Hill isn't just you and a bunch of monsters, because that would be just playing a shittier version of Doom. You get to meet a bunch of other characters as well. The first character जिससे आप मिलते हो is Angela, who is a teenager and claims that she is looking for her mom. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. लेकिन आप कटसीन में ही सेंस कर सकते हो कि कुछ तो सही नहीं है. Angela even warns James and advises James to not go into Silent Hill, to which James just simply replies, Okay, It's- I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just, I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. अब ये जेम्स ने हीरो या कूल बनने के लिए नहीं बोला है. It's just that he doesn't care anymore what happens to him. This tells us that James has lost his will to live and is desperate to find his wife again. गेम में प्रोग्रेस करने के बाद आप एडी से मिलते हो, who isn't really in a great situation. To put it lightly, he claims that he didn't kill anyone, even though there's like a dead body right next to his room. But लेकिन आपको भी कोई शेरलॉक होम्स या ECP प्रद्युमन होने की ज़रूरत नहीं है to realize that there's something wrong with this kid. फिर जब आप एंजेला से दूसरी बार मिलते हो, you stop her from taking a drastic step. मुझे नहीं पता यार ये वाला पार्ट कैसे लिखूं. This game is so dark. Eventually जब आप एंजेला से बात करते हो, you get to learn that the reason why she is taking such a drastic fatal step is because of the trauma caused by her family members. And फिर आप जब एडी से दोबारा मिलते हो एक bowling alley में, you can see him sitting next to a child, Laura. And just like any other child, Laura has no filter. Ha! You're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? But the conversation between James and Eddie has one of the most iconic voice lines in the entire Silent Hill series. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? जब जेम्स एडी से पहली बार मिलता है, he asks an important question to Eddie. You're not friends with that red pyramid thing, are you? Red pyramid thing? I don't know what you're talking about. Now the reason why Eddie says कि उसने कोई pyramid head नहीं देखा है is because every character sees a different version of Silent Hill. एंजेला को अलग monsters दिखते हैं, एडी को अलग monsters दिखते हैं, and जेम्स को अलग monsters दिखते हैं.
And all the different monsters that each character see is based on their past traumatic experiences. इसीलिए लॉरा सीज नो मॉन्स्टर्स और वो पूरा टाउन घूम सकती है बिना कोई डेंजर के. और ये कैरेक्टरिस्टिक एक बच्चे या लॉरा की इनोसेंस को पोर्ट्रे करता है. शी हैज़ नो पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और एनी गिल्ट रिगार्डिंग एनी एक्शंस दैट शी डिड बिकॉज शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड. So to her, Silent Hill is just like any other town with no monsters at all. Like if you haven't already fallen in love with this game, I don't really know what to say. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. Maria might be one of the most interesting characters in the game, and developers clearly spent a lot of time just perfecting her, whether that's her voice or body animations. Maria is the representation of what James wanted Mary to look like. She is the representation of James' sexual fantasies. She is everything that Mary wasn't for James. Essentially speaking, that she is perfect for James, and which the developers realize is kind of stupid as well. The main girl character doesn't have a wrinkle and doesn't have a kind of a bad point. She is kind of perfect. For example, if you are attracted by some woman, she's not perfect. Heck, Mary and Maria are played by the same actor as well. But that line between Mary and Maria starts to get blurred as you progress in the game. And that's where you see the attention of details the developer gave to this situation. Because the difference between Mary and Maria as you progress the game becomes really subtle and tough to notice. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई इस गेम की, हाँ इस गेम का एटमॉस्फेयर अमेजिंग है, कैरेक्टर आर्क्स आर एक्सेप्शनल, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इस गेम का म्यूज़िक. जैसे लोगों को स्काईरिम का म्यूज़िक पसंद है एंड इट्स वेरी क्लोज एंड इट मेक्स यू फील रिलैक्स्ड, द सेम इफेक्ट मेरे पे होता है साइलेंट हिल 2 के म्यूज़िक से. नाउ बिफोर यू कॉल मी अ साइकोपैथ कि ये हॉरर गेम्स का म्यूज़िक सुन के रिलैक्स करता है, ट्रस्ट मी द म्यूज़िक ऑफ साइलेंट हिल 2 इज़ अमेजिंग. Composed by Akira Yamaoka, who not only did the music but also the sound effects for this game. And what can I say? The guy absolutely nailed it. Like to go from composing the theme for Laura Promises to recording hundreds of unique footstep noises and creating the sound effect of ventilators on the hospital level. The music and the sound effects of Silent Hill 2 is amazing, and this man is a genius. And to have the understanding to have some sections where there's no music playing and really abuse the power of silence, it's just amazing to watch. 聞こえてること自体がサウンドが鳴ってるってことが演出だけじゃなくてサウンドが鳴っていないっていう、その前後、例えば前がガーッと鳴っててトントンと音が抜けてガッと鳴り出すとか。मैं साइकोलॉजिकल हॉरर एंड थ्रिलर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट नेवर इन अ मिलियन ईयर्स डिड आई थिंक आई वुड बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस जॉनर टू अ हाई लेवल इन वीडियो गेम्स, एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड. और आपको पता है एंड में इट जस्ट कम्स डाउन टू स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्राइंग समथिंग न्यू. आई प्लेड द गेम इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, और एटलीस्ट आई थिंक आई डिड. आई प्लेड इट ऑन अ प्ले स्टेशन 2 एम्यूलेटर. हाँ, दो गेम खेलने के दूसरे तरीके भी हैं, बट दैट्स लाइक प्लेइंग द साइलेंट हिल 2 HD वर्जन. बट आई डोंट रियली वांट टू प्ले द HD वर्जन बिकॉज व्हाइल डूइंग माई रिसर्च आई रियलाइज दैट द HD वर्जन इज हॉरेबल बिकॉज दे जस्ट ruined the fog entirely. So I wanted the original vanilla experience, so I chose to emulate and play the game, which you can as well.
But to think that this game was made in 2001 is wild to me. And to all the people who have played Silent Hill 2, I would love to hear about your experience of actually playing Silent Hill 2 yourself, whether that is your first playthrough or you have particular theories, because I know there's a lot of theories about characters in Silent Hill 2 and I really love watching and hearing stuff about them. Like I recently saw a video where how did Eddie get his pizza? Like what is this depth to a community that I have never experienced before? So definitely let me know about your experience of playing Silent Hill and I'll see you guys in the next one. But before you go, I'll let you go with one of my favorite cutscenes from the game. James. Give me back that knife. No. I won't. Saving it for yourself? Me? No. I'd never kill myself. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this.